Hello, super achievers. Welcome to my channel at the rate प्रताप हरिचंदन इन द ब्रैकेट द सिक्स सेंस पीएच, जहां हम लोग को सुपर अचीवर्स बनाते हैं। कोई भी सुपर अचीवर हो सकता है। आप एक पेरेंट हो सकते हैं, स्टूडेंट और इंडिविजुअल। सो वी इंटीग्रेट अप्रोच विथ इंटीग्रेटेड अप्रोच आप एक सुपर अचीवर बन सकते हैं एंड यू कैन लिव ए पर्पसफुल, जॉयफुल एंड रिच लाइफ। आज का जो सब्जेक्ट है थोड़ा सा टेक है, बेस्ड ऑन करियर। So this channel is dedicated to careers and self improvement motivation. तो आज बात करेंगे ए डे इन द लाइफ ऑफ ए डेटा साइंटिस्ट। तो ये डेटा साइंटिस्ट है कौन, ये डेटा साइंस है क्या और कहाँ से डेटा आता है। लेट्स थोड़ा सा जनरल जाते हैं। तो आपको पता है कितना डेटा जनरेट होता है पर डे नाउ डेज? इट इज 2.5 क्विंटल्स। दैट मीन्स 1, then there are 18 zeros bytes। तो कितना डाटा कहाँ से आता है? आपका आता है जैसे ऑनलाइन डाटा, सोशल मीडिया, देन ईमेल, देन ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, ऐसे ही एवरीथिंग इज नाउ ऑनलाइन। सो ये जो डेटा आता है वो क्या यूज हो सकता है, वो यूज करके डेटा साइंटिस्ट क्या करता है, व्हाई इट इज ए क्रिटिकल थिंग दैट ही और सी इज डूइंग। उस डेटा को लेके क्लीनिंग करके डेटा साइंटिस्ट एक मॉडल बनाता है। बेस्ड ऑन दैट मॉडल द रिजल्ट, एनी सेक्टर यू टेक, whether any business organization, any government sector, hospitals or any organizations world over, they take decisions। एग्जाम्पल लेते हैं हेल्थ केयर सेक्टर में, इट इज यूज्ड फॉर डिजीज डायग्नोसिस। डेटा है जो पहले से जो डेटा होगा कौन सा डिजीज में क्या जो सिम्टम्स है उसको लेके इट कैन डिटेक्ट द डिजीज फास्ट, एक्शन कैन बी फास्ट। देन पर्सनल मेडिकेशन, योर फ्यूचर फूड, व्हाट यू शुड ईट, दोस थिंग्स इट कैन डिटरमिन फ्रॉम द डेटा साइंस। अभी हम लोग देखते हैं कि एक एग्जाम्पल लेते हैं थोड़ा सा समझने के लिए कि डेटा साइंस करता क्या है, कैसे कैसे। लेट अस टेक एक सिंपल एग्जांपल। एक स्कूल प्रिंसिपल है, देयर इज अ स्कूल प्रिंसिपल हु वांट्स टू इंप्रूव द स्टूडेंट परफॉर्मेंस इन द नेक्स्ट एग्जाम। तो डेटा साइंस का साइंटिस्ट का काम क्या है? फर्स्ट स्टेप 1, he has to take the data of like the mark sheet of the students in the previous exam, their attendance sheet, then their skipping in homework, they're not submitting the homework or submitting dates or how many homeworks are being submitted, then extracurricular activities, participation in extracurricular activities। ये 4 डेटा वो लेता है फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या करता है? उसको क्लीनिंग करता है, क्योंकि डेटा जनरली एवरी लाइन ऑफ द डेटा मे नॉट बी करेक्ट। सो उसको जैसे भी कोऑर्डिनेशन करके he has to clean that data, अदरवाइज जो डेटा निकलेगा, रिजल्ट निकलेगा, वो ठीक नहीं निकलेगा। दिस इज द सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या होता है? एनालिसिस होता है। एनालिसिस डेटा साइंटिस्ट का काम है, एनालाइज करना ये डेटा को। क्या क्या एनालिसिस होता है? स्टूडेंट्स पैटर्न क्या है, उसमें दिखता है कि स्टूडेंट्स हु आर नॉट रेगुलर, देयर अटेंडेंस इज नॉट रेगुलर, दे आर स्कोरिंग लेस मार्क्स। एंड स्टूडेंट्स हु आर स्किपिंग homeworks, there also they are having less mark। And some students they are having less mark in science in compared to other subject। ये analysis हो गया, this is a pattern, third step। then आपका fourth step है कि building a model। model means simple, you can take a graph, you can make a graph from the data, from the excel sheet you make a graph। सो उसमें से पता चलेगा कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स नीड हेल्प, देन व्हिच सब्जेक्ट नीड्स टू बी टेकन केयर, मोर फोकस बाय द टीचर्स। ये हो गया एनालिसिस का सेकेंड पार्ट, दैट इज स्टेप 4, मॉडलिंग। फिफ्थ स्टेप है डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन दिस मॉडल। तो अभी प्रिंसिपल हैज टू टेक द डिसीजन कि क्या करना है। सो ही टुक द डिसीजन कि extra science class has to be implemented because for the students who are keeping less science mark in science।
Second decision है कि they have to put special coaching for students who are a little bit average or below average, or other students also there. That depends. They are taken their decision. Third step, उन्होंने decision लिया कि let's reward the students who are improving. ये हो गया decision. Fifth step. Sixth step, it is a critical one, because when we implement something, we have to see ना what is the result. How will you see the result? उसको monitor करना है कि whether after implementing these strategies, decisions, the next exam, whether the students are improving or not. So based on this is the work of a data scientist, based on which decisions are taken and the results are monitored. That is a repetitive job. Then again data is taken for, because analysis कैसे होगा कि students are improving or not, again data is taken, again analysis is done. So this is the basic work of a data scientist. अगर आपको समझ में आएगा, because if you are in class 8, 9, 10, 11, 12, this is the data scientist job. ये तो हो गया स्कूल का जस्ट बेसिक. आप सोचिए, suppose who is the data scientist of Indian government in the defense sector, in military defense sector. See how much data is being taken care to get the decision, to take the decisions, whether we should purchase which artillery, or many things are there, or any organizations take in those who are crores of turnover. It's all data. नेक्स्ट आते हैं कि हम लोगों डेटा साइंटिस्ट का ये डे कैसे होना चाहिए, कैसे होता है, थोड़ा सा एनालाइज करते हैं. आज रेगुलर जॉब, फर्स्ट ही लुक्स गेट रेडी फॉर द ऑफिस. व्हेन ही कम्स टू द ऑफिस, सीज द what is the data being input, data and email checks. That is a general one. Email check and data, what are the data, fresh data has been, whatever project he or she is working, what data is being taken, it is in. उसके बाद monitoring data and the preparation for the meeting. Then problem solving with the team, because everything is teamwork. Individually you cannot, the way the organization need, you cannot show those things. You need a team. Data exploration and modeling, next step होता है. Once modeling is ready, after data exploration, cleaning, okay, then he has to present in the management and for the decision making. Decision होगा based on the modeling. And generally जो big organizations है और government sector, it's a complex data. उसको लेके, वो डेटा को लेके क्लीनिंग करना एंड उसको मॉडलिंग बनाना, इट इज एक्चुअली कॉम्प्लेक्स वर्क. इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड, यू मस्ट बी गुड एट मैथमेटिक्स. आप बनना चाहते हैं डेटा साइंटिस्ट. आपको पता है व्हाट इज द ग्रोथ? पहले जानते हैं कि क्या ग्रोथ है. टिल 2030 द जॉब फॉर द डेटा साइंटिस्ट विल गो ऑन इंक्रीजिंग 31% ईयर बाय ईयर. एंड अभी जस्ट मैं सर्च किया कि व्हाट इज द जॉब पोस्टिंग फॉर डेटा साइंटिस्ट. It all stages, like if you are a junior data scientist, senior, or a data science manager, around 4,000 to 5,000 jobs in each job portals. See the demand. If you are good at mathematics, I would request, or I would suggest, not request. One thing is that I would suggest first find out whether you are really interested or passionate about data science and play with the graphs and the modeling, those things. Now a lot of modeling software has been there, Power BI, Tableau. This is challenging and exciting also. If you really want to enjoy this one, you can opt for this. Start dreaming from now. If you are class 9, 10, 11, 12, already you are in, you might have taken the decision. If not taken, you are good at mathematics, go for that. This is a suggestion for my advice for myself. Now let us see how to become a data scientist. Basic qualification is to become a engineer, BTech or BE in computer science, electrical, electronics. This is the basic. Or you can go for MSc in mathematics or MA in mathematics, because mathematics is the key for this data scientist. Applied mathematics, because D.Y. Patil, who is Chief Data Scientist, he is a PhD in
applied mathematics. You can go abroad for your studies. You can think of from now itself. So ये हो गया basic requirement. Then you can have certification from Google data scientist or IBM. Sort some certifications because it will add value to your qualification. And let us see what is the salary structure. When you are entering from junior data scientist, it starts from 2 to 5 lakhs. In India, I am talking about. First, I'll talking about India. Second is, if you are a little bit senior, after 1 year, 1.5 or 2 years, goes to up to 8 lakhs. 5 year plus, it can go up to 50 lakhs. If you are really doing a incredible job in that company. Or after 5 or 6 years, if you have the confidence, you can become a freelancer. You can have your own setup. You can support the companies for the data analysis. A lot of opportunities. Think of it and go for that if you're really interested. Yogya, and who are the data scientists in India? As I told one, he's an Indian, Dr. D.Y. Patil. Then now it is Kamalika Bhattacharya. You can search in Google. You can find a lot of them are there. Dr. Radhakrishnan Nagarajan, who is an IT professor, who is helping analysis of data in healthcare sector. And you may be knowing a lot of, like Arvind Jain, he's a senior data scientist in LinkedIn. So, if you want to play, again, I will tell this one, you can go for that. So this is the life of a data scientist, how he works, everything. आप अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो share it and subscribe to my channel so that I grow and you grow. We grow together to become a super achiever, live a purposeful, joyful and rich life. All the love, all the power.